right? Systematic and structured. What's the problem when we learn something and when I teach something, now at that time, we people focus on subject matter rather thinking about questions. So when it is time to frame the question, writing the answer, we are not able to convert that subject matter into answer because we never thought so. And if we are not thinking, we are not able to write, we are not able to decipher. So after completion of the class now, when you return at home, please revise it and try to convert into questions. Finally, questions with relevant, not the subject matter. Clear? So, as you went through the questions, what did you find finally? You were comfortable or not with the questions? First thing, your comfortability about questions. Were you comfortable about the questions? Right? Is it so? Questions are always straight, we are bent. We are already bent, so we are not able to go straight line. These were the questions, previous year's questions. All questions were previous year's papers. Okay, thank you. So, let's start with the questions. So, there are 7 questions. 1.5 hours. That's it. Look, in 3 hours, we need to write down 3,500 words, generally. How many words are there? 1,200 words? 1,500 words? 1,600 words? 16 to 1,700 words. It means it was around 1.5 hours. In that 1.5 hours, you need to sum up the questions. Right? Now, look, that was very important. When evaluator evaluate your copies, they have these points in their mind. First, relevancy of answer. How much answer relevant to the question? Whatever asked in question, your answer is not satisfying or satisfying. Means the relevant degree of relevancy to the question. Second, key terms. How many key terms you have used in your answer? Right? Then about the use of reports, government reports, publications, judgments, case studies, examples. Then about the association with the current affairs of examples to explain the concept and idea. If you think that you have a relevant case study, right? Today's case study or current case study you have in your mind, you can write it. It will enhance the efficacy of your answer, the essence of your answer. Then how well is the answer presented? 2 things are there. First, how much you are close or your proximity to the question. Second, your ability to present. First, ingredients should be correct. Second, presentation should be correct. In presentation, first thing is structure. Does your answer follow the classical model of intro, body and conclusion or not? Means your answer is systemized or not. Second, using subheadings, points, highlighting, flow charts, diagrams, maps, whatever is required, not unnecessarily. If it is essential to present
In a proper way, you may use all those things, whether it is flowchart or subheadings. If question requires, or you think that it will enhance the quality of my answer, right? Then about the language and grammar. Whether it is your Hindi or English or any other language, you need a better command on language. And second, the grammar. Do not make silly grammatical mistakes. Try to avoid it. Always be with the simple language, which should be quite digestible, easily grasped, easily understandable, right? They do not require any literary language except the literary papers, right? Then we have the word limit. Always adhere to the word limit. Word limit is your boundary. As an administrator, once you will get the administrative power, right? But with that power, you have some limitations also. Always you need to remember that your power is not to utilize in unauthorized or illegitimate way. We discussed legitimate and illegitimate, status and non-status power. So we are not there to go illegitimate. Again, this is, if word limit is always there, you need to not cross the word limit. That shows your legitimacy to things. And then about our things. So in general, if we say what we have, first of all, we need to remember that we have a time limit. In that time limit, we need to write answers. Then we need to review those answers. So try to complete the paper 15 or 20 minutes prior to the time. So you could make a review. You could revise. At least you can see, did I make any mistake, any problem, right? Can I rewrite something or something I need to highlight, right? Whether I can use the flow chart if I missed already. So first about the time. Second, you need one map here, right? How to begin with the question, to which question I am going to start, right? From which question I am going to start, that you need to, because try to cover all the questions. It's not that I am going to invest more or more time to 1, 2, 3, 4 questions, right? So it will not fulfill your objective. Try to cover questions as much as you can. Now, here, the first question is about the anthropology. Is the systematic, objective, and holistic study of humankind in all times and spaces, right? And question is about the elaborate the argument. This argument is already given. We know that all times and spaces, we know this thing. Anthropology is beyond the time and space. It is a holistic study of human being, right? Holistic study of human being across time and space. Now this we need to prove here. So anthropology means systematic study of human. Anthropology means systematic study of human is a subject which is quite systematic, objective and holistic, right? Clear? So let's start with the answer. First of all, as we discussed, that we need one First of all, let's start with the intro part. In intro, two things can be done. Either it is about the relevancy and contribution, or second about the definition, right? So here we shall start with the intro. We started what is anthropology. First, anthropology as a systematic study of human across time and space, right? Across time and space is quite systematic, objective and holistic in nature, right? As
stated by. Now, we have some terms and definition given by anthropologists like Hertzkovich, Kroeber, then Klachon, right? They all given science of man, man and its work, systematic study, right? And finally, since the appearance of earth. So we shall write all these things. With that, we shall write about the etymology. So first, etymologically, anthropology means anthropos plus logos, then about the studies. Then let's go one by one, because here we have anthropology. This is anthropology. It is systematic. Why? Because it is science. And science is based on logic, research, analysis, interpretation, and inference. So we have a method. So here we have a research, we have analysis, we have methodology, and finally we have inference. So it is quite systematic in nature. Result, conclusion, right? And that is called the research methodology, because it is based on field work. Anthropology based on field work methodology. So we have a methodology, we have research, we have analysis, interpretation, observation, conclusion. So it is very systematic in nature. We can give an idea also, like work of Bradley Brown, Andamans, Rivers Toda, and Malinowski on Trobriands. They all are systematic, based on research, analysis, interpretation, field work, and finally concluded and comparative. So first. Second, it is objective. Why it is objective? How we can say it is objective? It has a bit of objectivity, as we discussed. To the point, directional, right? Based on a specific field, based on a specific methodology, research. So objective means it has objectivity, it has science, it is factual, it is based on facts, it is based on facts. It is quite objective, purposeful, and it is all. Because whenever we make any study in anthropology, that is purposeful. We take one thing, we take an example, we take a tribe, like we went marriage, family, kinship, political, religious, they all had purpose. One person go to a specific tribe, then purposefully study all, and with that it study each and everything scientifically, right? Without any biasness. So it is quite objective in nature, without any biasness, very objective, purposeful, right? And then it is holistic in nature. Means anthropology studies human as a whole, biologically, culturally, socially, by the history, with the language, everything. So why we have linguistic anthropology, socio-cultural anthropology, biological anthropology, archaeological anthropology, right? Because when anybody research, that research is based on some purpose. कि आपको क्या पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, why you go to the tribes, क्या पढ़ने जाते हो, उनकी कल्चर, उनकी सोसाइटी, उनके आइडियाज, उनके ट्रेडिशंस, फिर आप उसके लिए अपना एक ऑब्जेक्टिव बनाते हो. पहले आपका एक ऑब्जेक्टिव बनता है ना, व्हाट इज माय ऑब्जेक्टिव, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या इसको पढ़ने के लिए. तो इट इज क्वाइट ऑब्जेक्टिव इन नेचर. आप ऐसे चल के थोड़ी जा रहे हो. यू हैव समथिंग इन योर माइंड दैट व्हाई अ पर्सन स्टडीज पर्टिकुलर ट्राइब. इरावती करवे जा रही है, संबंधम पढ़ रही है, कैथरीन गब्जारी नायर्स को पढ़ रही है, रेडक्लिफ ब्राउन जाके अंडमान्स को पढ़ रहा है, राइट? पढ़ रहा है ना, उसके पढ़ने पीछे पर्पज है, राइट? वो वहां के ट्रेडिशंस को, कस्टम्स को, कल्चर को देख रहा है, रिसर्च कर रहा है, अपनी थ्योरी दे रहा है, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट दे रहा है ना, मैंने उसकी फंक्शनलिस्ट लेके आता है. तो दैट ऑल कम बिकॉज दे आर ऑलरेडी हैड दैट ऑब्जेक्ट इन देयर माइंड.
and they are not biased. Objectivity है, scientific है, and then we say the holistic है, right? For the humankind in all time and spaces. So it is started with the origin of life. ये हमको इसमें डालना है, because it is about the elaborate. Comment नहीं है, right? It is not comment. It is not discuss. It is just elaborate. Okay, one thing is already said. Now how we elaborate one by one all the topics. So we shall start with the term, itmayo, definitions, then systematic, then objective, then holistic. Finally we can submit the finally it can be said that anthropology is wholesome. Anthropology is holistic. Anthropology is all about the human in a holistic manner. This is about in all dimensions. ये तुम्हारा होता है क्वेश्चन का आंसर. सो हेडिंग्स, सब हेडिंग्स, चार्ट बन गया. इंट्रो में आ गया टर्म्स एंड डेफिनेशंस, फिर आगे बॉडी में आ गया सिस्टमेटिक, ऑब्जेक्टिव एंड होलिस्टिक, राइट, एंड फाइनली कंक्लूजन में इट कैन बी सेड. सो फाइनली इट कैन बी सेड, राइट. Clear that anthropology is a holistic science, right, which deals with the human in all dimensions, in all spheres, across time and spaces. ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1. Clear dear? Now the question number 2. This is the question 2. What do you so first of all, it is all about the terminology and their explanation. Because what do you understand? So it is about the understanding. About not explain. How do you explain? No. Question is, what do you understand? So understanding is not the primary word. It is the secondary word. How? First, when a person goes through a thing, a book or a matter, first time mind collects data. And these collected data are stored here in the form of information. So first thing, when you face or interact with any source material, anything, first it comes into our mind in terms of information, right? When you process that information, means you make analysis, interpretation, research, then it converts into understanding. So understanding means you already process the data in your mind, right? It is not information, it is understanding. So understanding means the data is already processed in your mind. So now whatever answer will be there, this answer will be based on research, interpretation, analysis, means you know the example, you know the meaning, you know the history, you know the relevance. That is already understandable. They demand this thing. Okay, don't give us information. Give us your processing, understanding. So what do you understand by culture? Approach. Culture, relativistic approach and ethnocentric approach. Centricism नहीं है, relativism नहीं है. It is talking about approach. What approach a person has to somebody, to someone, to something. तुम्हारा approach क्या है? मतलब तुम्हारी सोच क्या है? तुम किस चीज को देखते कैसे हो? उसको कहते हैं approach, right? In the study of culture. Approach देनी है आपको कि कोई cultural relativistic की approach क्या होगी? When I am going to study culture, what is cultural relativistic approach and what is ethnocentric approach? Relativism is a definition, is a term, and relativistic is an approach.
आपने एक टर्म को पढ़ा है, उस टर्म को माइंड रखकर किसी को अप्रोच कर रहे हो, मीन्स यू आर कन्वर्टिंग थ्योरी इनटू प्रैक्टिकल. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. रिलेटिविज्म इज a theory, a subject, but when it is term about the approach called as practical use. In the study of culture, how practically somebody use the cultural relativism and ethnocentrism, right? Next is discuss the logical premises of cultural linguistic approach, right? लॉजिकल क्यों, क्या है कि आप इसको यूज करें अप्रोच को, क्या इसके पीछे तर्क है, व्हाई? क्लियर? बिकॉज ने कहा है डिस्कस द लॉजिकल प्रीमाइसेस ऑफ कल्चरल लिंग्विस्टिक अप्रोच. लॉजिकल प्रीमाइसेस, भाई if you use something you are in mind now, you are not illogical, because you are going with a subject which is quite logical, systematic science means logic. So if you are using any approach, what is logic behind that approach, why you are using that approach, that this question wants. So two part of question. The first is here, which is what do you understand, what do you, so this is about what, and second is about yes. So question will start with what. To study the culture, when we talk about the intro, right? If I talk about the intro, in intro I need to write why, what is the relevance of these both in the study of, what is the relevance of the study of, or second thing we can say this is called as yes, study of culture, right? Study of culture is the main theme of anthropological studies, whether for the simpler societies or the complex society like modern societies, right? Study of culture. And studying culture is related with two different approach. One is called as culture relativistic and second is called as ethnocentrism. And both are very important and significant in the study of culture. Now you start with what do you understand by cultural relativistic approach? In this approach, every culture is seen as unique at its place. Right? In this type of approach, significance means when and why culture is the most important topic for the anthropologists to study, to analyze. सबसे पसंदीदा टॉपिक रहा है उनका. And to viewing a culture, उनके पास they have two different approaches. One ethnocentric approach and second is culture relativistic approach. ये तुम्हारा स्टार्टिंग है, नॉट डायरेक्ट स्टार्ट कर रहे हो बिकॉज इट इज ऑप्शनल. सो मेक सम पॉइंट्स टू बिगिन, थोड़ी भूमिका बनाओ, बेस बनाओ. नाउ कल्चर रिलेटिविस्टिक अप्रोच, दिस अप्रोच is based upon the uniqueness of culture, which says that each and every culture is unique at its place, right? And culture should be viewed or seen according to their own uniqueness without any biasedness. So in culturalistic approach, culture is seen in their own view, called the emic approach, right? Culture is seen by their own view without any comparison in the mind. Clear? So this is just example दे देंगे, जैसे example देंगे, दो example, like the work of Malinowski in Trobriand's French Boas. This term was coined by John Lubbock, but systematically used by French Boas, right? So culturalistic approach sees every culture unique at its own place. नहीं, कोई गलत नहीं होगा, because finally you know the French boss, that's what. हम जरूरी नहीं, क्योंकि what do you understand लिखा है.
And in this approach, an anthropologist sees a culture unique at its place without any biasness. Example कोई भी दे दो, चाहे डायरेक्टली ब्राउन का दो, चाहे मेलिनोस्की का दो, किसी का भी दे दिया. Second, ethnocentrism. Ethnocentrism is also a perspective or approach to see the culture. In this, a person is very much influenced by its own culture and sees other culture by its own biasness. There a feeling of comparison appears. A feeling of comparison appears. So in ethnocentrism, one person is strongly associated by its own culture values, and it sees other culture by its own values and thought and approach. Beginning of anthropology began with the approach of ethnocentrism. And ethnocentrism at its peak may be very fatal, as the example of Nazis and Jews. Right? जो जूड के साथ नाजीज ने किया था. That is the extreme ethnocentrism. Right? So in ethnocentric approach, मार दिया था, गैस चैम्बर बना के संहार कर दिया था, लाखों यहूदी मारे गए थे हिटलर के टाइम में. Right? Homicides of Jews. So that was the ethnocentric approach. When somebody sees things. So ethnocentric approach is an biased approach when one person sees his own culture unique and superior. So their superior inferior biasness always happens, comparison always happens. Right? So this is about ethnocentric approach. Now discuss the logical premise of cultural. Now just it talks about only about the बस हमें इसको उठाना. What are the first? It sees every culture unique, unbiasedness, right? Third, as we know, culture is man-made, and culture is influenced by environment also, right? So there you can see each and every culture a unique environmental product, adjustment, or what we say that it's a environmental. We have discussed one definition now, that culture is the environmental component. Culture is the component of surrounding environment. So here nature and culture both are related to each other. So there, without any biasness, amic approach, right, uniqueness, we can see a culture, and that gives a very important is a real picture of the culture. If somebody wants a real picture of a culture, then this is very important. That is very much logic. To see a real picture, actual picture of culture, culture realistic approach is very important. So this is our answer for the secondly. Conclusion यही होगा. Finally, it can be said that two different approaches were always there, but cultural relativism is an approach. We see all the culture unique at its own place, right? And which decreases the comparison in terms of superior and inferior. ये हमारा ये क्वेश्चन हुआ. Now the third one. Yes. Simple diet question. Question क्या है? Discuss the look. Discuss the different forms of preferential marriage with suitable examples from tribal societies in India. Right? So
So, how to start? Marriage. Relevance of marriage. First क्या है? Relevance of marriage. Marriage, a very important and significant institution of society. Right? Marriage is very important or significant or vital institute for the society. Right? Vital मतलब जो जिंदा, वाइटल वैसे जीवित रखने के लिए जो इंपॉर्टेंट होता है, जो लाइव है, डेड नहीं, वाइटल है, डायनेमिक है, वाइटल है, वेरी वाइटल, राइट, ऑफ सोसाइटी, which allows a couple to live together, right, to enjoy their life and for the reproduction and performing other functions. तो without giving any definition from your mind, जो जो definition दी गई है, right, which allows to enter a couple in a durable or more permanent relation, right, more permanent, which allows in more permanent relation, and which accomplish what, some duties to each other, right, and associate with the reproduction of children. तो हमने ये बात हमने कही मैरिज के बारे में, क्लियर? थोड़ी सी बात, अगर आपको कोई डेफिनेशन पता है मैरिज की तो आप डेफिनेशन दे सकते हो, चाहे वेस्टरमार्क का हो, चाहे वो मोडोक का हो, चाहे वो लुइस का हो, चाहे वो मेलनोस्की का हो, चाहे वो कैथरीन गफ का हो, चाहे वो इरावती कर्वे का संबंधम हो, या फिर नोट्स एंड क्वेरीज हो, कोई भी तो तुमको आता है, मेल फीमेल जो भी करना है, राइट? तो ये हमारा एक सिस्टम एक लिखा। उसके बाद हमने कहा कि मैरिज इज एसोसिएटेड with some rules and regulation in each and every society, and these rules are essential to maintain the structure and vitality of the society. And these rules, what we have, the prescriptive and preferential. In those preferential marriages are quite significant. So now इसको लिखने के बाद हम इसके second form में आए, and that was preferential forms of marriages, right? And there are 4 preferential forms of marriages. First, cousin marriages, in which we have 2. One is parallel and cross. Then we have levirate and sororate. 4 preferential forms of marriages. Now let's try one by one. First, parallel cousin, as we have in Arabs, right? Parallel cousin India में क्योंकि very rare, India में very rare है parallel cousin marriage, right? Very rare क्योंकि ज़्यादातर, otherwise हम लिखते हैं कि Muslim tribes in India. बद्दू, सेकेंड इज चले जाओ साउथ में, राइट? साउथ में चले जाओ, वेरी मच. थर्ड कौन है? लेविरेट. सारी ले लो, टोडा को ले लो, गॉन्स को ले लो, कोरबाज को ले लो, और सोरोरेट में भी वही है जो लेविरेट में आएगा, राइट? सोरोरेट ले लो, लेविरेट ले लो. So these are the tribes and that is the example. और ये डायरेक्ट क्वेश्चन है तो हमें डायरेक्ट आंसर ही देना है. कंक्लूजन फाइनली कुछ नहीं है इसका, ये फाइनली खत्म है. रूल ऑफ रेगुलेशन हो गई, फाइनली ये हो गया, आपने कंक्लूजन दिया और ये एंड हो गया. वेदर इट इज रिक्वायर्ड और नॉट, राइट? वेदर इट इज रिक्वायर्ड और नॉट, आप लिख दो.
So there are different type of rules, regulations associated with the marriages in India, in which preferential marriage are very significant. ये खत्म कर दिया. जो conclusion देखो होता क्या है? When we talk about the conclusion ना, sorry, a simple rule is that it should be like a fish. Your introduction should match to the conclusion, and conclusion should match to the yes. Clear? वो दोनों से अलग नहीं होना चाहिए. What is introduction? What you want, what you will say in the remaining part. What you have already said. Right? जो start जो आगे बोलोगे वो intro है, और जो बोल चुके उसका essence क्या है? Conclusion है. तो क्या बोलोगे वो स्टार्ट कर देना, और क्या बोल चुके हो वो कंक्लूड कर देना, कि फाइनली ये कहा जा सकता है. इसके साथ साथ इफ यू आर समथिंग विच इज वेरी सिग्निफिकेंट इन करंट सिनेरियो, तो लास्ट में लिख सकता हूं कि इन करंट पर्सपेक्टिव ट्राइबल्स, द फॉर्म ऑफ मैरिजेज आर रैपिडली चेंजिंग इन ट्राइबल सोसाइटीज इन इंडिया, राइट, ड्यू टू इंटरेक्शन, ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन, राइट. इंपैक्ट कहा था ना हमने, किन किन का? ड्यू टू इंपैक्ट ऑफ फेमिनिज्म, अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. द प्रिपरेशन ऑफ मोर फॉर्म्स ऑफ मैरिज आर रैपिडली चेंजिंग. ये हो गया उसका कंक्लूजन. सो इन कंक्लूजन में एक वर्ड आता है विच इज कॉल्ड एज, हाँ, कि आगे क्या कहा जा सकता है? तो ये कहा जा सकता है कि जो प्रिपरेशन फॉर्म ऑफ मैरिज है लगातार अब चेंज हो रही है due to the traditional changes in society, impact of modern societies, impact of globalization, industrialization, urbanization, feminization, all these things, change, greater changes आ रहे हैं. ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3. Now question number 4 begins with define. Very important. Begins with direct definition is there. Define family and what is critically? What is critically? In hospital, when you visited to hospitals, you find two different type of sections. One is called CCU, second is ICU. Critical care unit, intensive care unit. Critical means very closely, alertness. Every time you are with that one because it is critical care. If a person is critical, right? At the time when you care this critically, means very intensively. So critical is very intense. So when you critically examine, what is examine? You are an examiner now. You are an examiner. What you are doing? Examine. Now you are no more a student. Now you are an examiner. You are examining. You are watching things very precisely. Okay, what is the universality of family? Right? Now you are examining. Examining means you are going through the process of experiments, a series of experiments. Experiment, observation, interpretation, research thing, whatever all things, you are examining one by thing, all these things. Okay, what are the pros, definitions, what are the critical things, what are the final one, everything you are examining very intensively. It is called critically examine or critically examine. So first define family. We have already seen so many definitions regarding the family, whether it is Lovis, Westermark, Murdoch. Very important is Murdoch. Economic, reproductive, and sexual. All three means biological, economical, and sexual. All three at one place. This is called family. This is called the family.
Family means responsibilities. Family means accountabilities. Family means duties. Family means obligations. Family means rights also. So family is a mixture of rights and duties. Rights and duties, obligations, responsibilities. Working together, living together, sharing together. And family is productive. Family is economically and biologically. So here, for Murdoch, family is the center of production. Family is the center of production. It's a productive unit which products biology as well as economic. Biology and economic, right? Second, it fulfills the need. It fulfills the need, as Malinowski say. What is functional approach? Satisfying need. So family is satisfying certain needs of protection, security, sexual desire, reproduction. So a need, a place of responsibilities, a place of joy, a place of living together, fulfilling obligations, responsibilities towards children, and children towards the parents. So define family in all those ways. Right? Family as a unit, family as an institution, family as a union, right? Family a productive unit. Clear? So first family. Then critical examination, universality of family. To that, how we shall start? We shall start that family, according to this, family is present in all forms of society, all over the world, across time and yes, because anthropology की line यही है ना. So family presents. So family is omnipresence. क्या पढ़ लिया? Omnipresence. So family has omnipresence in all time and spaces, in all type of societies. Omnipresence मतलब everywhere, हर जगह है. जैसे for God we said omnipotent, omnipresence. हर जगह, हर across time and space है. So family is omnipresent. Universality means family is universal. In each and every society it is there. So हम कहेंगे ऐसा क्यों कह रहे हैं हम लोग? Because all these obligations जो family कर रही है वो हर एक society में available है. Because family is a need, it fulfill the need, obligation, responsibility. So it is everywhere. Whether it is a simpler society, whether it is a complex society, family is everywhere. उसके बाद हम बात करेंगे critical examine है तो critics. What are the objections or critics of the family? तो हमें exceptions of the family देने पड़ेंगे. जैसे हमने कहा मेल एंड फीमेल, तो हम कहेंगे नहीं, कुछ फैमिली ऐसी है जो गे फैमिलीज है, राइट? उसके बाद में सेकंड लिव इन फैमिली. तीसरा प्रॉब्लम किसका दिया आपने? नैयर्स में संबंधम, विजिटिंग हस्बैंड्स, वो एक प्रॉब्लम है आपकी. उसके बाद में सिंगल पेरेंट, ये भी हमारा एक बड़ी चीज है जिसके अंदर पेरेंट भी नहीं है आपके साथ में, राइट? उसके बाद में हमने एग्जांपल दिया, तुम्हें याद हो तो, किसका? किब्रूज इन इजराइल. किब्रूज जिनमें इकोनॉमिक काम वो करते ही नहीं है, वो अलग रह रहे हैं, वो अलग रह रहे हैं, स्टेट संपत्ति है उनकी. फिर अफ्रीकन्स जिसमें ओनली मदर एंड चाइल्ड रह रहे हैं, हस्बैंड तो है ही नहीं फैमिली में. सो नंबर ऑफ पर्सन, इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज, लिविंग टुगेदर, राइट? उसके बाद में रिप्रोडक्शन, अब जिनमें हो ही नहीं बच्चे वो, फिर जिनमें संबंध ही ना हो, फैमिली कहीं रह रही है, पति कहीं रह रहा है, पत्नी कहीं रह रही है. क्लियर? सी ऑल दीज आर द एक्सेप्शंस. फिर हमने फाइनली क्या कहा था? हाँ, कि फैमिली शुड बी कंसिडर ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन बिटवीन मदर एंड अ चाइल्ड. इन द टर्म फैमिली इज यूनिवर्सल. सेकेंड, फैमिली शुड बी कंसिडर ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्लिगेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज. हाँ, ये कंक्लूजन में आएगा. क्लियर? सो दिस इज कॉल्ड द फैमिली. क्वेश्चन का आंसर में हर एक टॉपिक, ईच एंड एवरी टर्म शुड बी द पार्ट ऑफ योर आंसर. इफ इट इज अबाउट, पहले तो पॉइंट देखो कि किसके बारे में है. इट इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन किसके बारे में? फैमिली के बारे में. तो पहले पता लगा हमें इसके बारे में ही लिखना है, मैरिज नहीं, हाउस होल्ड नहीं, किनशिप कुछ नहीं लिखना. क्या लिखना है? फैमिली.
फैमिली के बारे में निकला। सेकंड, कौन सा टर्म है? यूनिवर्सिटी। कौन सा टर्म है? कौन सा टर्म है? तो डिफाइन करना है, एग्जामिन करना है क्रिटिकली और यूनिवर्सिटी को। सो क्वेश्चन एक्चुअली यहां पे है, एक तो क्रिटिकली एग्जामिन यूनिवर्सिटी एंड डिफाइन फैमिली, दो क्वेश्चन है, डिफाइन फैमिली एंड क्रिटिकली एग्जामिन दी यूनिवर्सैलिटी ऑफ फैमिली। तो एक जगह करना है डिफाइन और एक जगह करना है क्रिटिकली एग्जामिन। सो इन डेफिनेशन देयर विल बी नो क्रिटिकल। इन डेफिनेशन जस्ट गिव डेफिनेशंस, गिव एंथ्रोपोलॉजिस्ट। इन सेकंड पार्ट यूनिवर्सैलिटी को क्रिटिकली एग्जामिन करना है, राइट? नाउ द नेक्स्ट वन, yes, this is the question. Discuss the एक पार्ट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, राइट? तो हाउ विल राइट? पेपर के पीछे गए, हमने लिखा डिस्कस, राइट? व्हाट डिस्कस? डिस्ट्रीब्यूटिव फीचर, फीचर्स किस किस के? यूनिलीनियल, बाइलिनियल एंड बाइलेटरल, राइट? विद सुटेबल एग्जांपल्स। ये हमारा पॉइंट है। सो व्हाट वी नीड टू डू? Discuss this and this. When you discuss, you go with the pros and cons. तो आपको फीचर्स को डिस्कस करना है। सो बी स्टार्ट। अब हम कर रहे हैं, ये कौन से पॉइंट में आता है? इट्स ए पार्ट ऑफ किनशिप, इट्स ए पार्ट ऑफ किनशिप। क्या है ये सब? किनशिप। सो वी नीड टू राइट दैट किनशिप। व्हाट इज किनशिप? What is kinship? Relationship. Relationship. In a society, relationships are defined as kinship, right? And according to that, there are three types of kins. कौन से? कौन से kin? Uterine, agnate, and cognate. या affinal और conjugal. Affinal and conjugal. और कौन से बताए? यूटेराइन, मदर साइड, एग्नेट, फादर साइड, एंड बोथ cognates. So what is kinship? Kinship is a system where an individual relates to kins, right? Kins can be of two types: by marriage, by blood. Means agnates and uterine, both are called cognates. तुमने kinship को define कर दिया, right? And there are different type of descent in kins. Kinship is based on descent, right? And there are different type of descent, and this descent can be unilineal and बहुत भूल जाते हो, unilineal and cognates. Cognates में हमने क्या कहा? डबल डिसेंट और बाइलिनियल, देन एम्बिलिनियल, देन bilateral. So in this, what we need to do? Uni, bi, and bilateral. Let's start one by one. सबसे पहले हम देखें unilinear. In this type of descent, lineage is decided either parent, by either parent, mother or father. So in this way, there are two type of descent. First is patrilineal, second is matrilineal. Better example, patrilineal, Beals, right? Matrilineal, Khasi, Mayers, right? These are the matrilineal societies, right? Second, the example is bilineal or double descent. Bilineal or double descent. वो कैसे होता है? बताओ bilineal कौन सा है, double descent कौन सा है? Movable and right. Movable and example दो.
यस, याको योरुबा, भूल गए क्या? कौन सा है भाई? याको, जिसमें मूवेबल एंड इमूवेबल। मूवेबल कहां से आ रहा है और इमूवेबल फादर साइड से। वेरी गुड। याको योरुबा, तीसरे कौन सी थी? दिमाग लगाओ। याको योरुबा, तीसरी कौन सी है? समोन्स। चौथे कौन है? हम बाई पैरेलल, राइट? तो हमने बाइलिनियल में कोकोनेट्स में कौन कौन सी पढ़ी थी? बाइलिनियल, पैरेलल, पैरेलल, मदर टू सिस्टर, फादर टू ब्रदर, योरुबा। फिर एम्बिलिनियल, किसी को भी चूज कर सकता है, समोन्स, राइट? और उसके बाद में एम्बिलिनियल, जो हुआन से और हम, जो हुआन से एंड वी, वो एम्बिलिनियल से, बाइलेटरल से, बाइलेटरल। सो बाइलिनियल एंड देन वी हैव बाइलेटरल किन्स। बाइलेटरल किन्स मींस टू ऑल, वो सब जो। तो उसका एग्जांपल क्या दोगे? द एग्जांपल वुड बी जो वांसी, राइट? एंड जो वांसी को पहले कहां पढ़ा है? पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में कहां पढ़ा है जो वांसी को? बैंड्स, बैंड्स, बुशमैन कालाहरी एंड जो वांसी बैंड्स। और कई ने बैंड्स में नुवेर को ठोक दिया। नुवेर अजांडे बैंड्स है तो ट्राइब कौन है? दिमाग घूम गया। अगर ये बैंड है तो ट्राइब कहां से आ गई? राइट? सो कंक्लूजन सिंपल सूट एग्जांपल सपोर्ट टू योर आंसर लिखना है, इसमें कुछ नहीं है फाइनली। बिकॉज हमारे यहाँ पे क्या है, सीधा डिस्कस द डिस्क्रिमिनेंट फीचर्स। हमें फीचर्स लिखने। यूनियन का फीचर क्या है? वन साइड लीनियज, फादर और मदर, वेयर पैट्रिलिनियल, वेयर फादर बिलोंग पैट्रिलिनियल, मदर बिलोंग मैट्रिलिनियल, एग्जांपल। फिर लिखा बाइलिनियल, डबल डिसेंट फ्रॉम मदर टू फादर, दोनों, एग्जांपल याको। फिर क्या लिखा? बाइलेटरल किन, किन किन किन, द लीनियज ऑफ किन इज एसोसिएटेड विद एवरीबॉडी, ऑल साइड्स, राइट? जो वंशी एंड आर मॉडर्न सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी, राइट? जहां पर मैटरनल की तरफ से भी आ रहा है, पैटर्नल की तरफ से आ रहा है, सब तरफ से आ रहा है। दिस इज एग्जांपल। देख ली मैंने सबकी। मुझे देखने के लिए मात्र 1.5 मिनट चाहिए होता है, बाकी तो नंबर है। हाँ, मैं 1.5 मिनट खत्म कर लेता हूं। रिलेवेंसी, बेटे राम सर के भी चेक कर करके बढ़ गई है। ये सब मेरे पास ही आते थे जब चेक करानी होती थी। पूरी राउस के मैं था यहाँ पे। सो नेक्स्ट डिस्कस। अगेन क्वेश्चन इज अबाउट, देखो वर्ड को ध्यान रखना, क्वेश्चन इज अबाउट डिस्कस, प्लस माइनस प्रोज कॉन्स, जो भी तुम जानते हो। व्हेन टू पीपल कन्वर्स टू ईच अदर इट इज कॉल्ड डिस्कशन। प्लस माइनस सब डालना है। डिस्कस डिफरेंट मोड्स, मोड्स, मेथड, वेज। मोड्स मीन्स मेथड एंड वेज ऑफ इन सिंपल सोसाइटीज, राइट? जैसे आपके अंदर कोई, जैसे नारियल है आपके लिए एक सेरेमोनियल गुड है, क्या उसका कोई वैल्यू है? प्राइस का वैल्यू है? नहीं। सेरेमोनियल वैल्यू बहुत ज्यादा है। आप बतासे लेके जाते हो शादी ब्याह में, क्या उनका कोई पैसे का वैल्यू? नहीं। सेरेमोनियल गुड, सेरेमोनियल वैल्यू है। चावल सेरेमोनियल वैल्यूज है। तो दीज आर कॉल्ड द सेरेमोनियल गुड्स। कॉमन गुड्स, सेरेमोनियल गुड्स, देयर कैन बी टू टाइप ऑफ गुड। तो कॉमन गुड्स का कॉमन गुड्स के साथ, कॉमन का सेरेमोनियल, सेरेमोनियल का सेरेमोनियल। So first we say what is exchange. So here we start with the exchange. Exchange is the way of economy, right? Economy in society is, in simple society, economy is administered and regulated by the method of exchanges. The economy of simple society is based on substantive economy का फटाफट फिर से बताओ दो सर। Economy of simple society is based on optimization, based on values, right? In these type of society, trading not, exchange is very important or significant to conduct economy in a proper way, right? And this exchange can be of two type of goods, common and ceremonial. Exchange can be of three type, right? In depth, Carl Polanyi categorized this exchange in three types: reciprocity, redistribution, and market exchange.
Before that, we have simple system. We said exchange by goods. Second, barter system. Barter can be of two types: general and silent. General, that Nilgiri tribes, Toda, Badga, Kurumba, Irula, and silent Inuit Eskimos. Right? Example दे दिए दोनों हमने. Examples are very important here. उसके बाद बात आपने किया three type: reciprocity, redistribution, and market. Now reciprocity. What is reciprocity? It is a very common type of exchange in societies, where you exchange good in between the families, in between the society, right? And these exchange can be of three types: general reciprocity, balanced, and negative. General, where a person exchange things keeping in mind with the no returns policy. आएगी रिटर्न के नहीं आएगी. It's based on common benevolent, based on benefits, right? Common benefits. जैसे पिता ने पुत्र को, a father take care of their children. आपने किसी को मदद की पर लेने के लिए नहीं. In general marriages it happens. You give gift to any person, but आप उसको exchange के लिए नहीं कर रहे. General. Balance में give and take, exchange of gifts between two. तो एक बैलेंस का अच्छा उदाहरण हम क्या देंगे? कुला. Example is kula. Kula ring in Trobians, where exchange of Solba and Mobali with goods between tribes. Kula ring, clock, anti-clock. So Kula is a better example of balanced reciprocity. And negative is stealing, theft, dowry. Alliance theory is based on balanced reciprocity. Alliance is on balanced reciprocity. Symmetrical alliance. Atta sata. Asymmetrical नहीं. वहाँ पर receptor donor नहीं होंगे. Symmetrical. So this is. Then second is redistribution. In a redistribution, there is a stratified society. Reciprocity किस तरह की सोसाइटी में होती है? Egalitarian. और ये किसका एग्जांपल है? Stratified एग्जांपल. क्वाकेतुल एंड हाइदा. Redistribution. तो दो तरह का हो सकता है. एक तो जिसमें हम नाम थे बिग मैन, जिसमें सिंपल पिग, और दूसरा कुला एंड सेकंड क्या? पोटलास. सो पोटलास इन क्वाकेतुल एंड हाइदा एंड बिग मैन. तो रीडिस्ट्रीब्यूशन. और तीसरा दिया मार्केट एक्सचेंज. और मार्केट एक्सचेंज में क्या होता है? हमने कहा व्हाट इज द फीचर ऑफ मार्केट एक्सचेंज? मार्केट के अंदर क्या क्या होना चाहिए? एक मॉनिटरी सिस्टम होना चाहिए, प्रॉफिट, प्रोडक्शन, एंड बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई. बट इन सिंपलर सोसाइटी, markets are not the place of economic activities only. Yes, socio-cultural activities also, right? Socio-cultural activities also. जैसे बाइगा में मैट्रिमोनियल रिलेशंस वहां पे होता है, हमने डिस्कस किया था, जिसको इलोप्शन मैरिज बोलते हैं, पलायन विवाह, जबरदस्ती विवाह, जबरिया, राइट? एंड दीज मार्केट्स आर ऑफ थ्री टाइप. कैसे? फोर्टनाइटली, मंथली, ईयरली. जैसे हमने बस्तर में बात की थी, बैगा में एनुअल होता है, उसमें सारी चीजें होती है. So for their market is this thing. So finally it can be said that in simple society, exchange is has a very significant role in the economy, where continuity of society is maintained and resources are equally distributed in the society. High conclusion. So this is the sixth. And then the last one, the seventh one. Right. Differentiate between centralized political system and, देखो इसके मैंने तुम्हें उस दिन भी बताया था, बहुत सारे नाम हो सकते हैं ना? Head and headless, headless and syphilis, centralized, decentralized and stateless, centralized and stateless, syphilis और syphilis, कुछ भी हो सकता है. Finally we know in this we need to write. First start कैसे करेंगे? क्वेश्चन किसके बारे में है? Yes. And ये तो बात का
डिफरेंशिएट, पहला वर्ड क्या है? राइट, वी नीड टू राइट विच डिफर्स टू इच अदर, नॉट सिमिलैरिटी, डिफर्स टू इच अदर। किस किस के बारे में? सेंट्रलाइज एंड स्टेटलेस। एंड स्टेट, बताइए हाउ लॉ एंड जस्टिस आर एडमिनिस्ट्रेड इन स्टेटलेस सोसाइटी, नॉट स्टेट सोसाइटी, स्टेटलेस सोसाइटीज में। स्टेट में तो क्या होगा? व्हाट विल हैपन? अ प्रिजन है, एक लॉ है, एक कोर्ट है, सो दे आर वेरी मच सिस्टमाइज्ड। बट इन स्टेटलेस सोसाइटी, इन सिंपलेस्ट सोसाइटी में कैसे होता है, मैं ये बताना है। अब इसमें हम पहले बात करेंगे डिफरेंशिएट। तो हमने वो बनाया हेडलेस, राइट, एंड सिफिलिस। हेडलेस में दो दिया, बैंड एंड ट्राइब, यहां पे चीफ डोम एंड स्टेट। बैंड्स, डिफरेंट बैंड्स क्या है? डिफरेंशिएट क्या है हेडलेस में? नहीं, पहले हमें लिखना है हेड और हेडलेस के बीच में, तो हमें इन दोनों कैरेक्टर को माइंड में रखना है। पहली बात, इन हेडलेस सोसाइटी क्या लिखना है? डिसीजन मेकिंग, गवर्नेंस एंड कंट्रोल सिस्टम लाइज विद इन सोसाइटी, एंड सोसाइटी इज क्वाइट इगैलिटेरियन इन नेचर, इन टर्म्स ऑफ पॉलिटी, समानता, समता, इन टर्म्स ऑफ पॉलिटी। यहां क्या लिखना है? पॉलिटिकल कंट्रोल, पावर, अथॉरिटी is centered on apex in these stratified societies, right? दूसरा यहां पे decisions are made collectively, ये decisions are made by an authority, right? Here society is legitimate, here a center is legitimate, it is based on certain structure, right? जो हेडलेस है उसमें स्ट्रक्चर नहीं है, नॉट स्ट्रक्चर, इट इज क्वाइट स्ट्रक्चर्ड, राइट? ये चीजें अपने को करना है। अब एग्जांपल देते हैं, अब हम एग्जांपल में देंगे, लाइक इन बैंड्स। टेक एन एग्जांपल ऑफ बैंड्स इन किसमें? बुशमैन ऑफ कालाहारीज, और जो वंस इज 20-30 पीपल, राइट? नो पॉलिटिकल सिस्टम स्ट्रक्चर, डिसीजंस और रिजोल्यूशंस, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन ऑलवेज मेक ऑन द बेसिस ऑफ कलेक्टिविटी। In tribes, political systems are based on some groups, whether they are lineage based, clan based, association based, age based. नुएर, अजांडे, एग्जाम्पल ये था ना, नुएर में लिया था, अजांडे में लिया था, और किसमें लिया था? भूल जाते, दिमाग बड़ा ठंडा चलता है तुम लोगों का। सर्दी आ गई, जम गया दिमाग। कश्मीर में, श्रीनगर में क्या होता है, वो एक फेरन पहनते हैं और सिगड़ी यहाँ रखते हैं। तुम्हें सिगड़ी यहाँ रखनी पड़ेगी। तुम्हारा ये जम रहा है, वो यहाँ ऐसे पकड़ के चलते हैं ना, तो कई बार क्या होता है, थोड़ी सी ऐसे भी हो जाए ना, तो यहाँ जल भी जाता कोट। वो ऊपर से जाली की बनी होती है, और एक हाथ आपका यूं होता है। आप जब बात करेंगे, और वो थोड़े लंबे होते हैं, मतलब जो फेरन होगा ना, वो आपका हाथ होंगे तो फेरन यहाँ तक होंगे, ताकि हाथ को भी गर्म हो। तो ऐसे होता है, तो आपने यहाँ से चिकड़ी पकड़ी एक हाथ से, तो वो इस हिस्से को गर्म रखेगा। सही बात है, तो गर्म देश की जरूरत है, जम रहा है ये, राइट? सो फर्स्ट पॉइंट वाज दिस, ध्यान रखना कि इट्स ऑफ 300 वर्ड्स, तो फर्स्ट 150 आपने यहां डाल दिया। फिर हम एग्जांपल देंगे चीफ डोम एंड स्टेट्स का। चीफ डोम का एग्जांपल कौन दे? क्वाकेतुलैंड, हैदा, स्टेट में स्वाजी। एग्जांपल दे दिए दोनों के, स्वाजी स्टेट हो गया। देन लॉ एंड जस्टिस इन स्टेटलेस सोसाइटी। फर्स्ट में लॉ। इन सिंपल सोसाइटी, लॉ इज डिफाइंड इन अ प्रिमिटिव फॉर्म where there is no structure. Law is based on simple rules, collective responsibilities lies in the society, right? Simple बात है ये लॉ के बारे में, प्रिमिटिव लॉ के बारे में। नॉट बाइंड, नॉट स्ट्रक्चर्ड, based on traditions, customs, belief and collective, not individual, collective. Justice. So there are two different ways of justice in simple societies. First peaceful and second by aggression. In peaceful we discussed कैसे कैसे होता है, by oath, by test और avoidance और
सॉन्ग्स वियर्ड मेथड्स बाय सॉन्ग्स इन्यूट एस्किमोस। एग्रेशन में हमने क्या लिया था? फ्यूड, रेडिंग एंड किलिंग, 3 पार्ट ले लिए। फ्यूड में तो जिंदगी भर ठुको, ब्लड फ्यूड, किलिंग में मार दिया, खत्म कर दिया, बंदे ने बंदे को मार दिया, खत्म हो गया। बट फ्यूड इट्स ए ब्लड फ्यूड, इंटर ट्राइब होगा, वो चल ही रहा है आज तक, तुमने देखा होगा सूडान में, जायरे में, कांगो में चल ही रहा है। नहीं, इंटर ट्राइब तो हो ही नहीं सकता ना, इंटर में तो मरा तो हो गया, किलिंग होगा नहीं ना। फाइनली देखो, क्योंकि क्वेश्चन 2 अलग अलग सिस्टम के बारे में। सो लास्ट में लिख सकते हो कि फाइनली इट कैन बी सेड दैट पॉलिटिकल सिस्टम इन सोसाइटीज, इन सिंपल सोसाइटीज, is quite simple in nature, which is based on collectivity and accountability of each and everyone. यहां पर आपका क्वेश्चन ये खत्म हो जाएगा। So this is all about this paper, right? So again, when we discuss about the questions in anthropology, always first go with the research of anthropologists, their work, how they interpret and demanding of the question. It is not about your opinion made by people, how you utilize that opinion according to the question. This is about this, right? Chalo, thank you.